Hello guys, this is my 2012 Innova. So today I'm trying to solve a problem with engine जुगाड़. Basically ये जो ड्राइवर का सीट बेल्ट है ना, ये वापस नहीं जा रहा है. It is not going back in. So this is becoming a problem. This will get stuck in the door. इसलिए the idea is to remove this and use the second row seat belt. This is good. This is working well. मुझे पता नहीं ये फिट होगा कि नहीं, पर लेट्स ट्राई. अभी मेरे पास बहुत सारा टूल्स है और ये एक रैचेट भी है. तो ये अभी 14 mm का बिट है एंड दिस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट. सो आई विल बी यूजिंग दिस. ऊपर का भी मेरे हिसाब से सेम है. लेट्स ट्राई. Yes. So I will continue the video after I remove this. क्योंकि सबको पता है बोल्ट कैसे निकलना है, उसके लिए वीडियो नहीं चाहिए ना. गाइस, अभी मैंने ऊपर का बोल्ट निकाला है और बाहर का, और इधर एक ये सीट बेल्ट का वाइंडर है, इसको निकालना है. उसके लिए आपको पूरा स्टफ प्लेट, बी पिलर, गार्निश सब निकालना है. काफ़ी सिंपल सा काम है, कर सकते हो आराम से. ओके गाइस, सो दिस इज द सेकेंड रो सीट बेल्ट. बेसिकली दिस विल बी इन सम एंगल लाइक दिस inside the car. What we tried is to fit it like this straight, but as you can see it doesn't work. So the concept here is, imagine same on this pillar, the belt will be fixed somewhere in this angle. This will not work now. Correct. This will not work now. Moment you go to that angle, see, moment you go to that angle, it will work. But if you just make it straight, or the first row angle, it will not extend itself. So this is the mechanism that is being used, so that you cannot interchange the seat belts, and at the same time safety is not compromised. So yeah, this jugaad won't work, and it was a waste of a try. So we are fixing this back to the default rows.